Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine by grace of Almighty Allah. Welcome to my channel Bio910. Today we will continue the levels of organization. My last lecture was about the levels of organization, and today we will start from very smallest level, that is subatomic and atomic level. First of all, you must know that what is matter. All the things that are present around us are made up of matter, whether they are solid, liquid or gas, they all are matter. And all type of matter are made up of elements, and each element contain a single kind of atoms. तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं हमारे पास, तीनों का आपको कंसेप्ट होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर, anything that takes space and has weight is called matter, and solid, liquid and gas are the three states of matter. And then elements, atom combine to make element, same type of atoms combine to make element, and then element may be in the form of matter, solid, liquid or gas. Now first of all, atom. What is atom? This word atom, a mean knot and tum mean cut. It means the thing that cannot be further broken down into smaller pieces is called atom. In other words, the smallest level or the smallest thing is called atom. Now I am going to draw the structure of atom. Look carefully. This is an atom and this is its nucleus. Its nucleus contains proton and neutron, whereas its outermost layer, that is orbit, is called, in orbit there are electrons. And this is the structure of an atom, and an atom consists of nucleus and its orbit. In its nucleus, proton and neutron are present, and in its orbit, electron are present. One more thing that I want to add here is electrons are carrying negative charge, protons are carrying positive charge, and neutron is neutral. It does not contain any charge. So this is an atom. And these are proton, neutron and electron. These are subatomic particles. Subatomic particles. It means this is the subatomic level, and if we have complete atom, then it is atomic level. तो ये आपके सामने मैंने एटम बना दिया, ठीक है, और इसको बनाना बहुत इजी है. और एटम के अंदर जो छोटी चीज़ें प्रेजेंट हैं, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूक्लियस और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. तो आज का हमारा टॉपिक यही है, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल. होप सो आपको ये कंसेप्ट हो गया होगा सब एटॉमिक क्या चीज़ है और एटॉमिक लेवल क्या चीज़ है. दीज आर द मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. नाउ टिल नाउ 92 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड. अभी तक जो हमारे पास नेचर में हमें मालूम है, एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर आर 92. एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर, कुदरत में जो पाए जाते हैं एलिमेंट्स, उनकी तादाद है 92. आउट ऑफ दीज 92, 16 आर बायो एलिमेंट्स. अब टोटल 92 हैं, लेकिन इसमें से 16 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं. बायो मीन लाइफ एंड एलिमेंट मीन combination of atoms. It means the elements that are found in living organisms are called bioelements. Now out of these 16 we have further classification. We have 6 elements, here we have 10 elements. I will tell you one by one. 6 elements make 99% of the total mass. These 6 elements are making
99% of total body mass, whereas 10 elements that make 1% of total mass. यानी कि हमारे पास नेचर में 92 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से कि 16 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं, और इन 16 में से 6 जो एलिमेंट्स हैं जो कि बॉडी का 99% बना रहे हैं, और इसमें से जो 10 एलिमेंट्स हैं वो बॉडी का 1% बना रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई दीज 6 एलिमेंट्स एंड दोज 10 एलिमेंट्स. नाउ व्हाट आर द 6 एलिमेंट्स दैट आर मेकिंग 99% ऑफ द total mass? First of all, oxygen, then carbon, then we have hydrogen, then nitrogen, calcium and phosphorus. अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊं. ये ऑक्सीजन is present in our body and we are all the time inhaling oxygen. Oxygen is present in our blood. Then carbon, hydrogen, these are the organic elements that make glucose. Hydrogen is present in water. Carbon is also present in all the foods, carbohydrates, glucose, nitrogen, and then calcium and phosphorus. These are present in teeth and bones. So these 6 elements, oxygen, chlorine, hydrogen, nitrogen, calcium and phosphorus, these are making 99% of टोटल बॉडी मास. यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 99% इनका वेटेज जो है वो टोटल मास में आता है. और नेक्स्ट जो 10 एलिमेंट्स हैं अभी हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. ये 10 एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? ये हमारे पास पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, मैंगनीज, जिंक and iodine. These 10 elements are making 1% of total mass. तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 99% इनका रोल है और इनका रोल 1% है. It was all about subatomic and atomic level. Recall, I have made a diagram for you, pie chart, percentage composition of bioelement. If we see oxygen is 65% in protoplasm. Protoplasm is the living matter in an organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी लिविंग मैटर है उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, और उसके अंदर 65% ऑक्सीजन है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, phosphorus 1%, and others are 1%. So this is the percentage composition of bioelements in protoplasm. Hope so कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा. Keep in mind before this topic your concept about atom, element and matter must be very clear, so that it will be easy for you to understand all these things about the bioelements, their classification and their names. Don't forget to subscribe the channel Bio910 for further lectures, and till the next lecture, Allah Hafiz and stay blessed.